please do something regarding food testing. It's a very important and it's a very, very serious question. सुधा मूर्ति ने राज्यसभा में खाने की चीजों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि खाने की चीजों में मिलावटों के चलते देश में कैंसर के मामले और गंभीर बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी की वजह से कैंसर के केसेस भी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। बाहर के खाने की चीजों में 3 चीजें मिलाई जाती हैं, जो कि सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक विनेगर और टेस्टिंग पाउडर, जिसे MSG भी कहा जाता है। सरकार से उन्होंने मांग की है कि इस तरह की मिलावट को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुधा मूर्ति के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारा मंत्रालय इसको रोकने के लिए कई टेस्टिंग लैब पर भी पैसा खर्च कर रहा है। हाल ही में पेश किए गए बजट 2024 में भी इसका प्रावधान है। हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे। श्रीमती सुधा नारायण मूर्ति, सप्लीमेंट्री नंबर 4। Sir, food is the most important thing in life. Even a greedy person stops sometime eating, unlike money, land and property. There you can go to any extent in greed. So food plays an important role in one's life. Now what kind of food we eat and what kind of a disease we get, we should think in the modern era. There are cases rising, cancer cases are rising in our country due to adulteration and many more reasons, but adulteration is one of the most important things. There are out of all these, I want to mention only 3 things which are mostly used in the hotel industry. Number 1, synthetic color. Number 2, synthetic vinegar. Number 3, tasting powder, MSG. Because they look nice, it is tasty, but people are not aware that it will become a problem in future. Yes. So, May I request our Honorable Minister, what are though there are many government laboratories available, they are not well equipped. The people who are trained in that are not of the great your quality. supplementary. Okay, please do something regarding food testing and also the index in the hotels, giving the rating of the hotels in that case. Honorable Minister. I mean, it's a very important and it's a very, very serious question. Having said it, sir, my ministry is also making sure, but this mainly comes under, sir, FSAI. So they are the one who are taking care of this. Even in the recent budget also, sir, Honorable Finance Minister has announced 100 more such testing labs also, sir, where we are trying to make sure that the quality control is under checked and under all the required parameters.